Okay. Okay. So we are going live after a very long time today. Today's session, as I had shared earlier, is on semi-structured interviews. And I will be talking about them as a method for qualitative research. So it is possible that one may be using this method, though very unlikely, in quantitative research, where you get data and then there is an attempt to quantify it in terms of frequency of themes appearing and then doing some statistical analysis on it. So that is not what I would be looking at. I would be discussing semi-structured interviews as a method for data collection for qualitative research. And when we talk about, this will be the rough structure of what I will try and discuss today. So to discuss these interviews as method of data collection, to think about what is the purpose, the relevance of research questions and review of literature, how do we develop these interview schedules, key concerns that we need to keep in mind, administering the interview, transcribing. I'll just briefly mention some aspects, but we'll need a more detailed session later, and ethics. I will not discuss analysis of interviews because I have shared an earlier video on doing thematic analysis of interviews, right? So this would be a tentative structure of how we will proceed today. And these are, some of the key references that I've used for my presentation and this session. And these have been really, really helpful for me to develop an own understanding, my own understanding of how to use this method. And of course, as one engages with literature on qualitative research, as one uses the method, also a lot of ideas get clear. So these books are extremely useful for anyone who's doing qualitative research, especially in subjects like psychology, education. And so the one is by Carla Willig, by J.A. Smith, Hammersley, and this is just a paper. The last one is just a paper that I've used, but it's a useful paper which is available online. So you can use it to see the process of interview from developing to how to administer, how to analyze, and so on, right? So these are the references that I've drawn from. And like, as I began by saying, I am trying to engage with or discuss semi-structured interviews as a method of qualitative research. Hence, it is extremely important for us, to take a moment to think about what do we mean by qualitative research. And the reason why I'm saying this, why it is important to think about qualitative research is, I'll just discuss this briefly because this requires for an entire session by itself. There are many methodological philosophies that one finds in qualitative research. It's not that all people who are doing qualitative research necessarily agree with one another on some of the core assumptions around epistemology and ontology. But if we were to look at qualitative research as an umbrella thing, then what are some of the commonalities which one will find across philosophies, right? So I'm not getting into the philosophies today of qualitative research, be it social constructionism or interpretive research or critical theory research, critical research. I'm just looking at how a qualitative research generally are like. So two of the definitions that may be helpful. One is by Sandlowski, that qualitative research is an umbrella term for an array of attitudes towards and strategies for conducting inquiry that are aimed at discovering how human beings understand, experience, interpret, and produce the social world. So here, as one can see, the focus is not to capture some reality,
but try to understand, a social world comprised of human beings, and to see how human beings make sense of it, they experience it, they interpret it, and they produce their social world, right? The other definition that I've shared is by Hammersley. This is one of the books that I have. His is one of the books that I have referred while preparing this presentation. It's a form of social inquiry that tends to adopt a flexible and data-driven research design to use relatively unstructured data and emphasize the essential role of subjectivity in the research, to study a small number of naturally occurring cases in detail, and to use verbal rather than statistical form of analysis. And then in his book, he describes each of these phrases in greater detail. But largely the idea is that, in qualitative research, we don't have very fixed categories in which we put our data. It's the data that drives, us to, it's data that drives or guides what themes will emerge. And I'll come to the, there are certain assumptions that this definition brings out. Some key assumptions of qualitative research. So one is that social world is different from physical world. One cannot understand the social world the way one tries to understand the physical world, by standing away from it and by trying to capture it. फिजिकल वर्ल्ड को आप कुछ टूल्स ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हैं, उससे देखकर उसको एज इट इज कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें ज्यादा तक हम सोशल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं, तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सोशल वर्ल्ड जो है ये फिजिकल वर्ल्ड से बहुत अलग है, राइट? ये चेंजिंग है, ये एक तरीके से फिक्स्ड नहीं है. हालांकि हमारा फिजिकल वर्ल्ड भी फिक्स्ड नहीं है, लेकिन उसको हमारे लिए बाहर से देख पाना संभव है. लेकिन जो हमारा सोशल वर्ल्ड है उससे हम बाहर निकल के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा उस वर्ल्ड के पार्ट रहते हैं. एज अ रिसर्चर हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा इस वर्ल्ड में कोई लोकेशन नहीं. मैं पहाड़ को देखती हूँ, मैं पहाड़ से दूर खड़े होकर उसको देख सकती हूँ. मैं ये देख सकती हूँ कि मेरा पहाड़ से डिस्टेंस कितना है, और जो मुझे हाइट दिख रही है और मेरा पहाड़ से डिस्टेंस कितना है, उन दोनों डायमेंशंस को हम कैलकुलेट करें तो पहाड़ की हाइट लगभग कितनी होगी, एंड सो ऑन, राइट? सो वी नो अ वे टू स्टैंड आउटसाइड what we are trying to study and be able to capture it in its entirety. सोशल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर हम सोशल वर्ल्ड के फिनोमिना, रियलिटीज, परसेप्शंस समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो जेंडर का एक्सपीरियंस हो सकता है, कास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है, एज का एक्सपीरियंस हो सकता है, क्लास के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, तो कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं है जब मैं खुद इन सोशल कॉन्टेक्स्ट के बाहर खड़ी होती हूँ, राइट? सो वेदर आई एम, even if I don't belong, my not belonging also positions me in a particular way vis-a-vis that social world, right? अगर मैं ये कहूँ कि because I'm not a biological man myself, or I don't identify as a man, it may make it easier for me to, I can look at it from outside. Their response to me, right, will depend on how they perceive women also, right? So my identity as a woman still remains relevant. And here another word that I've used, it's changing, evolving, which is true of physical world also. It's more context bound and it's intentional, right? Our social worlds are intentional worlds. हम जो बोलते हैं, जो मैं अभी आपके साथ बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स क्या मुझे आपके साथ शेयर करना है, उसके बारे में मैंने सोचा है. सो वर्ड्स इन सम वेज आर आल्सो कम्युनिकेटिंग द आइडिया दैट आई हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट. बट एज आई एम इंटरैक्टिंग, as some questions will begin to come, I will also, I will not just keep saying what I had imagined that I would say, right? मेरा लैंग्वेज इस चीज पे डिपेंड करेगा,
कि मुझे क्या लगता है कि ऑडियंस ज्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या हिंदी में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, राइट? क्योंकि मैं यहाँ पे एक इंटेंशनल बीइंग हूँ. माय इंटेंशन इज to explain something to whoever is accessing this video, right? So because my aim is to make it accessible, I will use a language that may not based completely on my comfort, right? अगर मैं किसी को समझाने के लिए किसी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत बार होगा कि मैं वो भाषा नहीं इस्तेमाल करूंगी जिसमें मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ. शायद मैं चाहूंगी कि मैं वो भाषा इस्तेमाल करूं जो सुनने वाले के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, भले ही मुझे उसमें हल्की सी दिक्कत आए, राइट? सो a lot of what we do, even what we say, is intentional, is towards producing some effect for fulfilling certain aims, certain goals. So it is, we need to understand कि अगर हम शब्दों को भी लोगों के समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो शब्द सिर्फ एज इट इज उनका दिमाग आपके सामने खुला रख के नहीं प्रेजेंट कर देगा, राइट? जो लोग बोल रहे हैं वो उनके दिमाग का इमेज नहीं है, राइट? वो भी आपको अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा सवाल पूछा गया है जिसका जो मैं आंसर दूंगी वो मैं फील तो करती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि लोगों को वो रिग्रेसिव लग सकता है, पुराना लग सकता है, हाँ, बहुत दकियानूसी लग सकता है. तो उस समय हो सकता है कि मैं आपको वो कहूँ जो आप सुनना चाहते हैं, राइट? ताकि मेरे बारे में कोई ये ना सोचे कि मैं बहुत पुराने ख्याल की हूँ. तो जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च में फर्क सिर्फ इतना नहीं है कि वहां क्वांटिटेटिव में डेटा आपका नंबर्स में है और क्वालिटेटिव में डेटा हमारा शब्दों में है, चाहे वो लिखित हो चाहे वो बोले हुए हो. एक मेजर फर्क ये भी है कि हम उन शब्दों को समझते कैसे हैं. हम उन शब्दों से ये समझते हैं कि बोलने वाला एग्जैक्टली जो सोच रहा था, जो उसके जहन में है, जो वो उसको समझा है, उसको एज इट इज शब्दों से व्यक्त कर सकता है, या हम ये जानते हैं कि हमारे बोलने और समझने में हमेशा we are not at the same level, right? And it could be due to n number of reasons. कभी हो सकता है कि हम exactly वही बोलना चाहते हैं लेकिन हमारे पास शब्द नहीं. It can happen, for example, if you're doing research with children and you ask them to explain some experience, they may want to explain it just the way they experienced it, and yet how much language development has happened, how much vocabulary they have, may determine what they are finally able to convey. I teach a course in discourse analysis for PhD students, and we were just discussing an example one day about this child. अभी आजकल सब online चल रहा है. So this child who sits with his mother, the mother is trying to teach him या जो activities teacher ने उनको online दिया था, उनको वो उसके साथ करवा रही है. और बच्चा हर 5 मिनट के बाद अपनी माँ को पूछता है, आपको भूख लग रही है? मम्मा आपको टॉयलेट तो नहीं जाना है? अब इसका क्या मतलब होगा? हम इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? क्या बच्चा सचमुच में इस बात से चिंतित है कि उसकी माँ थक तो नहीं गई है, उसको भूख तो नहीं लग रही है, या उसको बाथरूम तो नहीं जाना है? Is that are the words communicating exactly what's in the child's mind? You explore a little. बहुत बार जब होता है ना कि आप थक जाते हो, सामने वाला नहीं थक रहा है, ये बोलने के बजाय कि मैं थक गई हूँ, हम सामने वाले को पूछते हैं कि आप अभी तक आप थके नहीं, आप थके तो नहीं, कि शायद वो बोल देगा, क्योंकि मैं अभी बच्चा माँ के आगे बोलेगा अभी मुझे सोना है, अभी मुझे खाना है, तो वो समझ जाएगी कि ये इस प्रोसेस को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट? पर अगर वो थकी है, वो खाना बनाने जाएगी, वो टॉयलेट जाएगी, तो बच्चे को अपने आप ब्रेक मिल जाता है, right? So a lot of these things can also, so all I'm trying to say is this is important for us to understand, to know for what purpose we are using semi-structured interview, and I'll come to that later. But this idea of an intentional
idea of intentional human beings who comprise the social world is extremely important to remember when we are discussing qualitative research. Again, a key assumption is that it's difficult to capture from outside. आप कहीं बाहर से इसको नहीं देख सकते हैं, हम सोशल वर्ल्ड के पार्ट हैं, और हम इसको अपने फील्ड के साथ एंगेज करके ही समझ सकते हैं, एंड वी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड इट एज कि हमने कैप्चर कर लिया. अगर कोई सोशल रियलिटी है कि मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ मेरा क्या है, मेरे बोलने से आप मेरा प्रोफेशनल लाइफ नहीं कैप्चर करेंगे, मेरे बोलने से आप ये कैप्चर करेंगे कि मैं उसको कैसे समझती हूँ, मैं उसको कैसे एक्सपीरियंस करती हूँ, मेरे परसेप्शंस उसके बारे में क्या है, मैं उसे कैसे इंटरप्रेट करती हूँ. बहुत स्वाभाविक है कि कोई इंसान जो अपने सोशल एक प्रोफेशन, मेरे साथ ही अगर कोई मेरा कुलीग है उसी स्पेस पे है, they may feel about it differently than what I feel about it, right? So by talking to me, you will not be able to capture what exactly happens at my workplace. What you will be able to capture perhaps is how I understand it, how I experience it, what meaning I make of it, or what meaning I want to convey about it. If one also looks at the intentionality, my sharing about my workplace will not just depend on how I experience it, how I understand it, and how I interpret it. It will also depend on how do I perceive your intentions of asking me. अगर मुझे लग रहा है कि मेरा anonymity, मेरा confidentiality assure होगा, आप genuinely research कर रहे हो और workplaces के reality को समझने की कोशिश कर रहे हो, तब हो सकता है मैं आपसे ज्यादा खुल के बात करूं, राइट? अगर मुझे लगता है कि आप कुछ मॉनिटरिंग विजिट कर रहे हो, या आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका मेरे यूनिवर्सिटी को फंड मिलेगा या नहीं मिलेगा डिटरमिन करेगा, तो हो सकता है मैं उस इंटेंशन से आपको जवाब दूं. So this is also important to remember, that when we use our data collection methods to capture a social world in qualitative research, we are not trying to capture the world as it is. We are trying to access the ways in which it is experienced, perceived, interpreted, made sense of by people and communities. एंड लाइक आई सेड, कि मैं जो बोलूंगी वो सिर्फ मेरी समझ पे डिपेंड नहीं करता है, मैं आपसे क्या शेयर करूंगी इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मैं आपके इंटेंशंस को कैसे समझती हूँ, मैं आपके लोकेशन को कैसे समझती हूँ. तो प्रेजेंस ऑफ रिसर्चर का अपना लोकेशन, वो इस लोकेशन के बारे में कितना अवेयर है, ये सब भी क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है. जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स में जो चीजें हमको लगता है कि हमारे रिसर्च को कंटेमिनेट कर सकती हैं, उसे डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, हम उन्हें कंट्रोल या एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च में हम रिसर्चर को एज अ डिस्टर्बिंग, डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंस नहीं देख सकते हैं. Researcher is not somebody who has to be controlled and eliminated. A researcher is somebody who will need to be aware of what they are bringing to the field so that they can know how it is impacting the field, right? This is just a very, very brief background of qualitative research that I wanted to share, so that one can understand, in what context we are talking about semi-structured interviews, because I'm sure in other approaches, it may be used differently with different set of assumptions, right? So when do we use semi-structured interviews? Semi-structured interviews, जैसे उसका नाम ही कहता है, let me come here first. So researchers use semi-structured interviews in order to gain a detailed picture of a respondent's belief or perceptions or accounts of a particular topic. यानी ये स्मिथ का जो डेफिनेशन है, उसके मुताबिक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हम तब यूज करते हैं जब हम अपना जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिनको हम इंटरव्यू करने वाले हैं, वो किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं,
उसे कैसे देखते हैं, उसे कैसे उस एक्सपीरियंस करते हैं, उस एक्सपीरियंस को कैसे नरेट करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं, राइट। हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं कि जो हुआ उसे कैसे एक्सपीरियंस किया गया, उसे कैसे समझा गया, उसके बारे में लोगों के क्या ओपिनियंस थे, क्या व्यूज थे, हम ये जानना चाहते हैं, राइट। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एक तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं जिसमें हमें अगर 10 क्वेश्चन पूछने हैं तो हम वो 10 सवाल लिखकर जाएंगे और इंटरव्यू के दौरान हम उन्हीं 10 सवालों पर टिके रहेंगे, राइट। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ओपन एंडेड हो सकते हैं, क्लोज्ड एंडेड हो सकते हैं। क्लोज्ड एंडेड मतलब जहां पे जो आंसर है वो पहले से निर्धारित किया गया है, इट इज ऑलरेडी बीन डिटरमिन्ड, राइट। So a closed-ended structured interview would be, do you like this? So you can only respond in yes or no, or at most I don't know, right? I don't have the possibility of responding in terms of, I like it sometimes, but on certain days I don't like it, right? And this answer is very different from I don't know. So structured interviews to closed-ended, right? They limit the kind of responses that a person can give, and are usually used in quantitative methods, right? Structured interview open ended भी है, उसमें जैसे मैंने कहा कि अगर आप 20 सवालों के साथ गए हैं, आपको वही 20 सवाल पूछने हैं और उन्हीं सीक्वेंस में पूछने हैं, राइट। अब इस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जब इस तरीके से जाता है, तो इसका एजम्पशन भी कहीं ना कहीं ये है कि आपके सारे सवाल ऐसे होंगे जिससे आप एक्चुअली अपने सब्जेक्ट से, अपने पार्टिसिपेंट से वो सब निकलवा सकते हो जो आपकी रिसर्च के लिए काफी, राइट। These questions will be able to get you the responses. इसके अलावा कुछ और इमर्ज नहीं कर सकता है, and the centrality is on the questions, कि इट इज ओनली अबाउट द क्वेश्चंस। अगर ये 20 क्वेश्चन आपने पूछ लिए तो आपका डेटा कवर हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च के असम्पशंस को रिविजिट करें, कि पीपल आर इंटेंशनल पीपल, they will also take time to make sense of you before they decide whether they want to give you details or not. They may also take certain time to articulate. और बहुत बार ये होता है ना कि कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे मेरा ओपिनियन अच्छे से मालूम है, राइट। कुछ चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में शायद मैंने इतना ना सोचा हो, और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपके पूछने पर मैं उसके बारे में सोचना शुरू करती हूँ, राइट। क्योंकि उससे पहले मेरा उस चीज के बारे में मेरे लिए शायद रेलेवेंट नहीं थी, या मैंने उतना सोचने की जरूरत नहीं समझी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के सिचुएशन में एक प्रायर नॉलेज, एक प्रायर रिस्पॉन्सेज हैं जो बस आपके सामने दिए जा रहे हैं। इंटरव्यू के प्रोसेस में व्हेन वी स्पीक, like in my earlier sessions on academic writing, I have stressed that writing is also a process of thinking. It is not that thinking precedes writing. Similarly, a lot of times for us, right, thinking does not precede speaking. As I'm speaking to you, मैंने अपना पीपीटी बनाया था कुछ पॉइंटर्स के साथ, राइट। एग्जैक्टली मैं किस टाइम पे क्या एग्जाम्पल दूंगी, किस चीज को इलैबोरेट करूंगी, नहीं करूंगी, that is coming as I'm trying to make sense of how this must be going, right? So ये जो हमारे assumptions है qualitative research के about the subject, about the situation, about the researcher, अगर हम structured interviews use करते हैं तो कहीं ना कहीं ये assumptions जो qualitative research के हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं ignore कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। So semi-structured interview, is a method that of course has a certain structure. आपके जो research questions हैं उसी से आपका जो tool है वो guided होगा, right? अगर मेरा सवाल people's understanding on national education policy पे है, तो मतलब if my research question is how do teachers understand national education policy, or what are their opinions about national education policy,
तो ऑफ कोर्स मेरे जो क्वेश्चंस होंगे, यू नो, देयर इज ऑलरेडी अ रिसर्च क्वेश्चन, देयर इज अ थीम दैट विल गाइड माय क्वेश्चंस, right? So you know, I'll ask them whether they've heard about NEP, what they have heard, have they read it, what they have read, what they found about it, and then come to, you know, how do they see it. So my एक तरीके से एक स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी रहना पड़ेगा, राइट? अब मैं यू नो, आपका स्कूल कैसा है, आप क्या पढ़ाते हैं, एनईपी से मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे चली जाऊं, कॉन्स्टिट्यूशन से मैं फिनलैंड पे चली जाऊं, then I will not be able to do a good research, right? So semi-structured interviews are interviews where you have some structure in terms of themes and some you know, questions or pointers that you take with you when you go to the field, when you go to your participant. But it is also flexible. You can decide the sequence of your questions. अगर कुछ, you know, कई बार होता है कि आपने एक सवाल पूछा लेकिन उसके जवाब में आपके पार्टिसिपेंट ने एक और क्वेश्चन भी आंसर कर दिया। आपके क्वेश्चनेयर में हाउ और व्हाई अलग अलग थे, लेकिन आपके पार्टिसिपेंट ने हाउ के बारे में बोलते हुए व्हाई भी बोल दिया, then it becomes redundant to ask the next question, या फिर से वो सवाल पूछेंगे व्हाई का, right? तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टिसिपेंट को भी कन्वे कर रहे हैं कि आप वो क्या बोल रहा है उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप अगर दोबारा से वही वही चीज उनसे पूछेंगे, या कई बार हो सकता है कि मान लीजिए किसी पार्टिसिपेंट ने मुझे बोला कि मुझे एनईपी का जो एक चीज मेरे लिए स्टैंड आउट की वो ये था, राइट, वो ब्लेंडेड लर्निंग था या वो ये नेटवर्क ऑफ स्कूल्स था। अब ये सुनने के बाद मेरा सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हायर एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं? Will I not first want to, you know, अगर उस पार्टिसिपेंट खुद बोल रहा है कि ये चीज मेरे लिए स्टैंड आउट करती है और हम एनईपी के बारे में जानना चाह रहे हैं उनकी व्यूज, will I just go on to my question on higher education, or will I wait and then say, you know, why don't you share more about it? What stands out for you? Why does it stand out for you? And we may find that, you know, this pursuing of this line of thought may get us richer data, a richer sense of what people think about this policy than just, you know, going sequence wise with our predetermined questions, right? So semi-structured interviews allow us more flexibility. They allow opportunities to explore interesting themes, insights, avenues that may emerge during the interview. You know, a rapport formation therefore becomes very important, because if, you know, a lot of times it does happen that people come to you to interview you, and if you feel they are just doing it as a formality, right, या वो खुद इस सब्जेक्ट से बहुत engaged नहीं है, आपके पास टाइम कम है, एंड देव ऑल्सो कम, प्लीज आपसे बस 10 मिनट बात कर सकते हैं, प्लीज बस आज आपका इंटरव्यू लेना है, ये बहुत जरूरी है, हमको सबमिट करना है, तो हो सकता है कि जवाब देते टाइम मैं भी सोचूं कि ठीक है बस दे देती हूँ ना, इतना सोच के देने की क्या जरूरत है, मतलब जो मेरे रिस्पॉन्सेज नोट कर रहा है वो भी बस फॉर्मेलिटी भर के लिए कर रहा है, राइट? सो हाउ आई वुड रिस्पॉन्ड वुड डिपेंड also on the rapport you've been able to establish with me, of how I perceive you, how I perceive your intent, your preparation, and so on, right? And it is important in a semi-structured interview to see your respondent as the expert, क्योंकि हम उनका व्यू जानना चाहते हैं, हम अपना व्यू उसके द्वारा कंफर्म नहीं करना चाहते हैं, right? So it's extremely important to speak as less, to keep our questions as short, as exploratory as possible, and to allow the subject, you know, more opportunities to speak. And I will come, you know, importance of engaging with relevant literature is extremely important for developing a semi-structured interview schedule, for administering it, I mean for using it, and I will come to it why. So if this is what semi-structured interview is about, so research questions, you know, jahan pe hum semi-structured interviews ko use kar sakte hain, wo honge you know, jahan pe hum kisi ke experience ke bare mein janna cha rahe hain, what is the experience of student, what is the online learning experience of students, right? Or how do parents experience online learning of their children,
बहुत सारे रिसर्चेस इस चीज पे भी हो रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन लर्निंग के इस दौर में बहुत सारा टीचिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीचर से पेरेंट्स पे शिफ्ट हो गया है, बिकॉज दे आर द वन हु हैव टू इंश्योर दैट द चाइल्ड इज सिटिंग, चाइल्ड इज डूइंग वर्क, टीचर ने कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर दिया लेकिन अब उनको उसको अपने बच्चे के साथ करवाना होगा, राइट? सो आई मे वांट टू एक्सप्लोर देयर एक्सपीरियंस, their perceptions, opinions, views, understandings, beliefs. These are the things that you can explore with semi-structured interview. A lot of times students have questions like, what is the impact of online learning on students' learning? Now, and they write that their tool of data collection will be semi-structured interviews. अब सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज से आप इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग नहीं देख पाएंगे, राइट? आपका लर्निंग कितना हुआ है, कैसे हुआ है, वो तो आप किसी आप जब तक मैं उस पर कुछ एग्जाम नहीं देती हूँ, या एग्जाम नहीं, मैं कहीं उसको अप्लाई नहीं करती हूँ, उसको यूज करके कि मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, आप नहीं जान सकते कि मेरा लर्निंग हुआ है या नहीं, राइट? Or if I want to see, what role does games play in children's development? अब इसमें कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं, so to understand the role of play in child's development, we will interview teachers or parents. अब teachers और parents, हम assume कर रहे हैं कि teachers और parents को play का जो role है development में, उसके बारे में सब कुछ पता है, राइट? और वो जो आपको बोलेंगे वही रोल ऑफ प्ले है डेवलपमेंट पे. So many of our parents and teachers may not have engaged with literature on how useful play is. प्ले क्या सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, सेंसरी मोटर, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के लिए, या सिर्फ दिमाग के लिए? कैन इट बी यूज्ड फॉर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट? कैन इट बी यूज्ड फॉर इंट्रापर्सनल, मतलब अपना अंदर का सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकता है? They may not be aware of a lot of things that ways, right? जरूरी नहीं है कि वो हर तरीके का प्ले बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. तो अगर आप पेरेंट्स और टीचर्स से बात करके समझना चाहते हैं कि प्ले का क्या रोल है डेवलपमेंट में, तो आप प्ले का डेवलपमेंट में रोल नहीं समझ रहे हैं. आप जो समझेंगे वो ये है कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि प्ले का क्या रोल है, और टीचर्स क्या समझती हैं कि प्ले का क्या रोल है. So anything, there are certain things, how does a teacher teach a particular subject? Now, again, if you ask a teacher, the teacher can say a lot of things. It might still not show you what she's doing in the classroom. जो चीज आप इंटरव्यू से पता लगा पाओगे कि हाँ वो पढ़ाने के बारे में, टीचिंग के बारे में कैसे सोचती हैं, कैसे प्लान करती हैं, उसको कैसे आपसे शेयर करती हैं. But to see, how she teaches, you will actually have to do classroom observations, right? So it's very important to know why you're using which method, right? And we use semi-structured interviews not to capture a particular phenomena the way it is happening. We use interviews to be able to access people's understanding, perceptions, experience, beliefs, views, opinions about that phenomenon. Right? So please, this is something that one finds a lot of time. The impact of NEP on teachers में सिर्फ interviews ले रहे हैं. You'll have to go to the school and see, how the responsibilities of teachers are, how many hours they are required to be there. Interview can be one part of it. So I hope that is clear. Now, like I said, कि semi-structured interviews में कहीं ना कहीं structure है. And that structure is determined by your research questions. आपके research questions और literature review से पहले आपके tools नहीं develop हो सकते हैं. Tool development can never be the first part of your research. Tool development will happen once your research questions are clear. क्योंकि research question में मेरे को पता लगेगा कि मैं वो phenomena हो कैसे रहा है, उसको समझना चाह रही हूँ, या उस फिनोमेना के बारे में लोग सोचते क्या है उसको समझना चाह रही हूँ, राइट? एंड इवन इफ इट कम्स टू हाउ पीपल मेक मीनिंग, मुझे एक इंटरव्यू से शायद समझ नहीं आएगा. उसके लिए मुझे फील्ड में रहना पड़ेगा,
लगातार इंटरैक्ट करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, have numerous individual interviews, focused group discussions, and so much more, right? So it's the research question that determines your method, your methodology as well as method. Methodology is, you know, when you're thinking, there is a theoretical orientation, a paradigmatic orientation to why you're using what method, right? जब हम इन चीजों पे बात करते हैं कि हम ये मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, किस अप्रोच के तहत यूज कर रहे हैं, इसके assumptions क्या हैं, तब हम मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं. बट एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज अ मेथड दैट वी आर यूजिंग, right? So your research questions need to be very well articulated. Research questions आपके initial questions नहीं होते हैं. Research questions also develop as you're engaging with literature review. I've done a session on concept map. That is an important process in developing research questions. And research questions is again one of those sections, one of those things that I will have a more detailed session sometime soon, right? But you need to have research questions to determine what shape your interview will take. So for example, if I want to, you know, understand, my larger theme is teachers understanding of NEP. उसमें मेरे research questions हैं, what is the teachers awareness around NEP, what are the teachers views around NEP. Suppose these are the two research questions. That means my first question about teachers awareness, so I will have to have some questions which are more about, you know, what have you heard about it, what do you know about it, किन किन चीजों पर NEP बात करता है. And because the other question is around what is their opinion, I will have to ask question like, so what do you think about it, what are the advantages, what are the disadvantages, in what ways do you think it will affect you, you know. So these will be my questions if I know my research question. अगर मैं जान रही हूँ कि मेरा research question है, I want to know their views, their evaluation of NEP, then I may not ask them to describe things in detail, right? So your research question needs to be articulated. Literature review is extremely important. अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, आपने अपना लिटरेचर रिव्यू नहीं किया है, तो आपके क्वेश्चंस भी बहुत वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होंगे, आप रैपो नहीं बना पाएंगे, यू विल नॉट नो कि कब कुछ, यू नो, इम्पोर्टेंट उस आपके रिस्पोंडेंट ने कहा है जिसको आगे परस्यू करना पड़ेगा, right? For instance, you know, I mean, some of these examples I may have shared in my classes that I take on qualitative research methods, and I can see that some of my own students are here. So this may be familiar with them, you know, but for instance, if I'm trying to understand, my research question is around, you know, how do teachers engage with, or what are the teachers' beliefs around gender, you know, students' gender in classroom. अब अगर मैं अपना literature review नहीं करके गई हूँ, I have not engaged with any of the writings on gender by, you know, writers who worked on this area, be Judith Butler, be Nivedita Menon, or anyone else, right? Then my questions will mean I will only ask the teacher about boys and girls, right? मैं खुद बहुत सारी, मतलब मैं पूरा इंटरव्यू करके आ जाऊंगी और मुझे ये तक पता नहीं लगेगा कि उस टीचर का अंडरस्टैंडिंग जेंडर पे बहुत कंस्ट्रेंट था, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानती थी कि जेंडर का स्पेक्ट्रम क्या है, you know, what the different gender identities are. And because I hadn't acquainted myself with that literature, of course my questions will also not reflect that. If my questions are not reflecting that, how is the respondent's response reflected, right? It could be that if it is a very informed respondent, they may say that your questions are wrong, आप इन चीजों के बारे में तो पूछ ही नहीं रहे, but that will also impact your interview, you know, in terms of how seriously they take you as a researcher. So on this, या आप NEP पे किसी से पूछने जा रहे हैं,
आपने खुद NEP नहीं पढ़ा है, तो आप जो रिस्पोंडेंट बोल रहा है किस चीज को थोड़ा और समझने की कोशिश करना है. हो सकता है कि रिस्पोंडेंट a lot of times when we talk to people about policies, because there are number of policies or there's number of educational documents, people do get confused between one with the other. हम NEP ड्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो फाइनली 60 पेज का पॉलिसी आया है. अगर आप इन चीजों से फेमिलियर नहीं थे, तो पता लगा कि आपका पूरा इंटरव्यू ड्राफ्ट पे हो गया, because you also didn't understand that what the person is speaking is coming from the draft and not the final policy, right? So very, very important to do your literature review, with a lot of engagement, taking time, and with a lot of rigor. Otherwise, your questions will not be well formulated. They will not be of a kind that can actually get a rich data. अगर हम किसी का एक्सपीरियंस समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे सवाल ऐसे होने चाहिए कि हम उस एक्सपीरियंस के बारे में उस इंसान को बोलने का ज्यादा से ज्यादा मौका दे सके. पर अगर हम खुद उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, राइट, तो हम बहुत सीमित से क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत सीमित से सवाल पूछेंगे, जिनमें उस एक्सपीरियंस को कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल है. So, for example, some of you may be working on gender and religion, gender and caste. I can see one of our research scholars who's got a brilliant proposal on how she wants to understand gender and caste in higher education. Now, अब इसमें अगर आप डिटेल में, मतलब इनका बहुत डिटेल्ड रिव्यू लिटरेचर का किया है, अगर कोई नहीं करे, राइट, तो वो कहाँ पे इंटरसेक्शनैलिटी है, कहाँ पे उस सवाल को थोड़ा और आपको डेप्थ में जाना है, उन सब चीजों के बारे में पता नहीं लगता, राइट. So these two things are very important. And now let's come to so when we begin to do our literature, we want to form semi-structured interview questionnaires scheduled now. What are the different types of questions? So Spreadly had identified 4 types of questions that we generally use in semi-structured interviews. And in Carla Willig's book, these type of questions have been discussed in much greater detail. So descriptions can be descriptive, right? So what जैसे मान लीजिए आप किसी भी फिनोमिना के बारे में सोच रहे हैं. I want to understand how students experience online learning, right? So tell me something about your class. How is it? What happens in it? Right? So all these will be descriptive questions where we are asking the person to describe in detail, what this is about, right? So what is your class like? Can you describe, any one period, how it happens? So these will be descriptive questions. Structural questions would involve, certain kind of categories, organizations. For example, even if I'm talking about online learning, अच्छा आपका पीरियड किस तरीके से अरेंज होता है, पहले टीचर क्या करती है, उसके बाद क्या होता है. So some kind, getting the person to organize what they are saying. We may ask a person to contrast, तो आप आप अभी जब ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं और जब पहले स्कूल जाते थे, तो आपको क्या फर्क लगता है. एंड इवैल्यूएटिव विल बी लाइक, आपको कौन सा बेहतर लगता है, क्यों बेहतर लगता है. So these are some kind of questions which are open-ended, which are exploratory, that we may want to use in our semi-structured interview schedules. Now, while preparing the schedules, certain things which are extremely important are: 1, you need to finalize your themes or range of topics, areas to be covered before developing the schedule. Otherwise, you can go all over the place. Here I would like to share this one example. I hope you're being able to see this book. A very, very useful book, like I said, Rethinking Methods in Psychology by Smith and others. Now,
in this, let me show you where I'm coming. So this is an interview schedule. The research question is they want to understand a patient's experience of kidney dialysis. Ma'am, the text is not visible yet. Okay, wait. We can see your presentation, not the text. Sure, I'll share this. Okay, now it might be visible. Yes, ma'am. So this is an interview schedule, and I'll show you what the question for this interview schedule is. So this is a project that the author, that is Smith, had taken up on kidney disease patients' response to dialysis treatment for their illness. Right? So they want to understand how do the patients respond to their treatment, to the dialysis for their illness. In this, he thought about what the possible sub-questions might be, and realized that, they would want to understand how does the the person experience dialysis, what impact it has on their identity, what are the different ways of coping, right? So if these three are the components, broad areas that you have identified, then it helps you develop your questionnaire, right? Schedule. So you know that the first theme is how do they experience dialysis? So it will be like, can you tell me the brief history of your kidney problem? Can you describe what happens? What do you do when you're having dialysis? How do you feel? What do you think about? How does it affect your everyday life? If you had to describe what it means to you, what would you say? Right? And the next about identity. So how would you describe yourself as a person? Has having this kidney disease made a difference to how you see yourself? What about compared to before you had kidney disease? And you can see in each of these, they're using certain descriptive questions, structural questions, evaluative questions, contrast questions. On coping, what does the term illness mean to you? How do you define it? How do you think of your own physical health? Do you see yourself as being ill? How do you deal with it? Do you think about the future? And so on. Right? So this is, if you have things, like I said, if I was to now think of questions for that NEP research, then my questions would look, more like, so first few, I may want to divide it on how much they know about it, how much, and how do they evaluate it. So my first few questions of how much they know about it is, can you tell us something about the policy, its key points? What does it say about, what according to you it says about the school? What does it say about teacher education? What does it say about higher education? And then come to evaluative part. So what do you think about it in general? What do you think are its salient, useful points? Where do you think, that there is a certain gap? How do you think it would benefit this? What could be the potential obstructions? What are the things that you do not find useful? So this is how you will then be able to frame your questions. So first, your themes, your range of topics, your areas have to be clearly identified. Avoid value-laden questions. Value-laden questions in the sense, don't you think it's a bad policy? Or don't you think it's a very helpful policy? That's a value-laden question. Leave it for the person to answer how they would want to respond to it. So asking them, what do you think about it? And you can always explore more, and that is why semi-structured interviews allow you to use prompts. For example, suppose I ask, how do you feel about the policy? And the person will say, हाँ ठीक है. Right? And I proceed to the next question. Now that हाँ ठीक है really doesn't give me an idea of whether it comes from, having engaged with the policy, not knowing about it. So I may use some prompts कि क्या जब आप बोल रहे हैं कि ठीक है, तो क्या चीजें हैं इनमें जो आपको ठीक लगती हैं, राइट? क्या आप उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, वो क्यों ठीक लगती हैं आपके, आपके हिसाब से उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कुछ ऐसा भी है जो शायद आपको उतना ठीक ना लगे, वो क्या है, वो क्यों आपको ठीक नहीं लगता है? तो हम दोनों चीजों को थोड़ा ग्रेटर डेप्थ में एक्सप्लोर कर रहे हैं. But avoid value-laden questions in terms of, don't you think it is a regressive idea?
right? Don't you think your statement is homophobic? Right? So avoid, don't you think a teacher should not do this? Don't you think this is aggressive? Right? So avoid value-laden questions. Use prompts. By prompts, I do not mean hints. Prompts means, see, when I said that in a semi-structured interview, it is the respondent, right, who is the expert. If we think the respondent is the expert, we must try to get more on that topic from the respondent. So sometimes, some people are more verbose, वो आप कुछ पूछेंगे वो उसको बहुत डिटेल में बताएंगे, और कई लोग होते हैं जो शायद इतने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, राइट? आप उनसे पूछेंगे कि आपको इस चीज के बारे में पता है? हाँ, क्या पता है? यही कि मतलब अच्छी चीज है। अब आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स यूज करने पड़ेंगे। कुछ अच्छी चीजों के बारे में बता सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आपके उपयोग की नहीं है, कुछ ऐसी चीजें जो जिनसे शायद आपको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. So you will have to use some prompts, but those prompts don't have to be, guiding them to a certain answer, right? It's very, very important to remember that in a semi-structured interview, a researcher is a facilitator. You are not there to guide or direct. You can't be judgmental. See, we also need to understand why we do research. Right? This is another example that I think I would have discussed in my class, which is around, so as somebody who's been part of an institutional mechanism for addressing sexual harassment, if we have to think of good sensitization campaigns, it's also important to understand what the different problematic ideas, assumptions that students may be coming with, right? If I don't know what their, what the incorrect, the problematic assumptions are, my sensitization program may be very, very, बहुत इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा. मैं बहुत ऑब्वियस सी चीजें बोल के आ जाऊंगी, राइट? तो अगर कहीं ना कहीं मुझे लोगों को जेंडर के प्रति सेंसिटाइज करना है, तो मुझे थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए ना कि कौन सी चीजें लोग नहीं समझ पाते हैं, राइट? या मैं वही चीज बोल के किसी को छेड़ना नहीं है, किसी को रेप नहीं करना है, ये शायद, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सब समझ जाते हैं. मतलब अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली में हुआ है, राइट, उसमें हम ऑप्रेस्ड कास्ट को कैसे देखते हैं, जेंडर को कैसे देखते हैं, छोटी बच्ची को कैसे देखते हैं, वो बहुत साफ से निकल के आता है, राइट? तो आई एम नॉट सेइंग दैट दीज, बट आई विल आल्सो नीड टू नो मोर, कि बहुत बार ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल हैरासमेंट सिर्फ अनइन्फॉर्म्ड लोग करते हैं, जिनको आप बोलेंगे एजुकेटेड नहीं है. ये एक बहुत, मतलब it's a very, very problematic cliche that we've developed over a time, that a certain class of people do it, right? It happens in progressive spaces, it happens in spaces where people would assume that everybody is gender sensitive, it happens in intimate spaces of trust. So one will need to engage with that. For that, I need to know how people are thinking. And if as an interviewer, on my face, in my response to the respondents' views, I become judgmental. अरे मतलब तुम ऐसे सोचते हो, right? I will not be able to get, I will not be able to know what I want to, right? अगर मुझे सब पता है तो देखिए मुझे रिसर्च ही करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ, मैं एक सेंसिटाइजेशन स्टूडेंट्स का करना चाहती हूँ, जेंडर इश्यूज पे, कास्ट इश्यूज पे, तो मुझे समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, वो कौन सी चीजें हैं कि हाँ, आपको किसी को ये नहीं बुलाना है, सबको पता है, लेकिन बहुत बार जो चीज आपको लगता है कि आप सही बुला रहे हो, वो एक्चुअली पेट्रोनाइजिंगली बहुत ऑफेंसिव हो सकता है, राइट? सो अ कास्टिस्ट स्टेटमेंट may not just be calling somebody a particular term, saying, oh wow, you were so good, I couldn't believe you're from this caste. That is as much of a problem that one may not see, right?
So I will need to understand, and if I cannot understand, if I'm judgmental, if I'm directing people to the answer that I want to hear, that has to be avoided. So your questions have to be very clear, simple, not value laden, avoid jargon, right? हम academic discipline से आते हैं, हमारे लिए कुछ टर्म्स के हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी को लोगों ने किस किस तरीके से डिफाइन किया है, हम कौन सा डेफिनेशन ज्यादा यूज करते हैं या किससे ज्यादा सहमत हैं, करिकुलम के बारे में करिकुलम को कैसे डिफाइन करते हैं. साइकोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं जिनको जो टेक्स्ट बुक्स हैं या जो डायग्नोस्टिक मैनुअल्स हैं वो एक खास तरीके से डिस्क्राइब करते होंगे. When you ask people, it's not always that they will know what definition are you coming with, right? So to say, what do you think about curriculum? Does everybody know what curriculum is? Do they know how curriculum is different from syllabus? I have met a lot of people who would use both the terms interchangeably, right? So if I'm trying to understand something on curriculum, I would first begin by asking people, तो इससे आप क्या समझते? बहुत बार rather than assuming and using that term upfront, tell me about this, I may first want to know what do they know about it, right? What is it that they understand from it? Or saying, so what are your coping strategies for depression? Now, is coping strategies a term that everybody is familiar with? Or would you want to say, kya karte hain? So avoid jargons, keep it simple. Right? That is extremely, extremely important. Use open-ended questions, avoid yes or no questions. Begin with general and move to specific. We call this the funneling technique. Ki hum, so if I want to understand, say, your views on some specific incident that may happen vis-a-vis the foreign policy, I may want to begin with, okay, how, so do you take interest in politics? Do you take interest in the international affairs? What have been significant concerns? And then move to, do you know about this? So what do you feel about this? So move from general to specific. A reason why we do this also is, one, that when you begin from general, you're also allowing a person an easy space to enter into something which is more close, more personal, more in depth. दूसरा ये कि अगर आप हो सकता है उस इंसान को जनरल आइडिया किसी फिनोमेना के बारे में हो, लेकिन वो स्पेसिफिक्स उन्होंने नहीं सोचा है, आप पहले ही स्पेसिफिक्स में चले जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, right? Then there is nothing else that you can ask. So move from general to specific, become more in depth, धीरे धीरे जाते, right? And avoid asking multiple questions in one question. बहुत बार क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं कि क्या आपको आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर ऐसा सोचते हैं तो आपको क्या लगता है इसके बारे में क्या होना चाहिए. Now in many of this, person may only respond to half the question, or they may miss something entirely. It can confuse them. So keep your questions short. I mean, when I say short, I mean to the मतलब जितना पूछने के लिए जरूरत है, keep them short, keep them open-ended, don't make them directional, don't let them carry your positions in it, avoid value-laden questions, judgmental statements, avoid using heavy jargon. jargon या कोई टेक्निकल टर्म आप तभी यूज कीजिए अगर आपका इंटरव्यू उसके बारे में है. उसमें भी पहले जानने की कोशिश कीजिए कि आपका रिस्पोंडेंट उसे कैसे समझता है, right? Do they understand it the way you understand it, or do they have different idea about it, right? So if for example, if I'm trying to explore feminism, people have different understandings of it. So I may first want to, rather than saying, do you think feminism is good or bad, I may want to understand what do you understand of feminism. That will help me contextualize the answer also, right? Is the person dismissing feminism after knowing what it really is, or is a person dismissing feminism because they have an incorrect understanding of it?
राइट? अगर मैं एज्यूम करके चलूंगी कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है फेमिनिज्म की जो हर कोई ले पर्सन यूज करता है, एंड आई से ओके सो व्हाट डू यू थिंक, यू नो, what is your opinion on feminism? Do you think it's good? How do you see it evolving in recent times? And the, you know, I find 20 people who say that it's something to be, you know, just done away with. Is it because they have not understood it? Is it because they've understood and then this is what they're finding problematic with it? So you need to understand what do they mean by it, right? So don't make assumptions about the respondent or their views. So these are some of the things that you need to keep in mind when developing your questions. Coming to the next slide, just one second. Yeah, this. Now we come to conducting the interview. You know, so in a semi-structured interviews, please try not to have too many questions. क्योंकि जब आप जाएंगे तो आप और सवाल बहुत likely है कि आप add करेंगे, right? You may ask more questions than you had gone with, so don't keep it very long. But that doesn't mean, I mean, do ask or do have certain prompts or pointers towards what all you will need to ask for the topic to get fully covered, right? अगर हम एक what is your experience of something के बारे में बात कर रहे हैं, for example, one of my students a few years back was working on you know, how do people remember their days in a boarding school, right? So she had to begin with, you know, what their memories are, how do they remember it, how it was, what was important for them, how do they feel about it now. So you'll have to think of what all will be the aspects of it and see if you have questions covering each. Now, you know, ethics is something, you know, when I mention it in the last slide, this is not to, you know, ethics is not a footnote or an afterthought. It is something that we need to inbuild in our methodology right from the beginning. And when I say, you know, importance of literature review, the importance of being a reflexive, rigorous, informed researcher is as much a question of rigor of research as much as it is a question of ethics of research, right? आप confidentiality इंश्योर करेंगे अपने पार्टिसिपेंट को, इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब उनको आइडिया है कि आप किस बारे में या आपका टॉपिक किस बारे में, राइट? आप किस चीज पे उनसे सवाल करना चाह रहे हैं। वो एकदम डायरेक्ट ना भी हो तो मुझे इतना तो बताना पड़ेगा कि मैं यूनिवर्सिटी में लोग कास्ट को कैसे समझते हैं, रिलीजन को कैसे समझते हैं, या इस पॉलिसी को कैसे समझते हैं, so that if they feel they are uncomfortable talking about it, they can withdraw, right? So don't, आप उनसे झूठ मत बोलिए, डिसेप्शन से इंटरव्यू मत लीजिए. Let them know and make an informed choice as to whether they want to be a part of it or no. And please remember that a respondent always has a right to withdraw from an interview even after having consented, right? हो सकता है you know, आप कुछ मान लीजिए साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी, कुछ डिस्टर्बेंस के बारे में, कुछ मेंटल इलनेस के बारे में मुझसे बात करना चाह रहे हैं. Initially I thought कि, you know, okay, it's long past, I can talk about it, but while talking I feel that it's making me uncomfortable, right? So it should be okay for me to be able to say, okay, you know, I thought I could do it, but I'm not being able to do it. So respect that, right? I know that it can be, you know, inconvenient, but your inconvenience cannot be, you know, prioritized over somebody's well-being. Rapport formation बहुत जरूरी है. Rapport formation is not just about, you know, making a pleasant conversation with somebody, or, you know, आप कहीं पे बैठ के, you're not trying to, you know, it's not like you're trying to pick up somebody for a date, right? You will put your best foot forward and it's all nice and happy. Rapport formation is something in which you're honest about your research, about your own self, your location, you know, a conversation that can inspire trust in the person who will speak to you. You know, whoever speaks to you, immaterial of what the topic is, right? And when we are, you know, we are social beings, we are political beings, everything that we say
it's not neutral, right? So I should know what I'm getting into, and how sensitive you appear to me, how sensitive you are, how well prepared you are. A lot of times people go for interviews बहुत unprepared होते हैं अपने टॉपिक को लेकर, उसके कोई बैकग्राउंड रिसर्च पार्टिसिपेंट या उनके कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं किया है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि क्या किस भाषा में बोलना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, or what is contextually sensitive, how would you greet your participant. So all that becomes really important, right? So do a good background research, be familiar with the context, be familiar with the situation, and always be very, very clear and honest with your respondent about all aspects of interview. किस बारे में है, कितना टाइम लगेगा, राइट? टाइम लगेगा, अगर आप सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि 1 घंटा लगेगा, आप 1.5 घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं कि 2 घंटे तक लग सकता है, आप 1 घंटे को पौना घंटा नहीं बोल सकते हैं. Semi structured interview में if you finish it in less than half the time that you had thought of, then perhaps somewhere either your questions were not right, you did not know how to pursue some interesting themes that were emerging, or you didn't do enough background information, you did not do enough, you did not familiarize yourself with the context of your participant to realize कि वो participant इस interview के लिए apt नहीं है, suitable नहीं है. यही reason हो सकता है कि अगर मैं 15 सवाल लेके गई हूँ जिनका और exploratory सवाल हैं जिनमें मुझे लगता है कि कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए, वो अगर आधे घंटे में खत्म हो जाता है, तो वो तो यही है कि मैं कोई भी चीज या तो एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ, या मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन में कुछ गलती की है कि आई टुक अ सब्जेक्ट who actually did not have much to say on this, right? But if you've gone prepared, then it's only likely that your interview can take more time, right? So please let the participant know. Sometimes I mean, this I can share from my personal experience that it can be extremely problematic. If somebody tells me that, we are doing a research or I have an assignment, just बहुत recently हुआ था ये कि किसी ने मुझसे किसी जान पहचान किसी कॉलीग के थ्रू बोला कि वो ये रिसर्च कर रहे हैं और मुझसे इंटरव्यू करना चाहते हैं. तो मेरा उस टाइम पे थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था. आई शेयर कि मैं 45 मिनट्स सफिशिएंट होंगे. बट जब इंटरव्यू शुरू हुआ वो चलता चला गया, मैं बीच में रोकना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो इंटरव्यू 1.5 घंटे तक चला. समवेयर 1.5 घंटे से ज्यादा चला. And so I did feel that I wish the person had been upfront कि उतना टाइम लगेगा तो शायद मैं इस दिन नहीं, मैं किसी और दिन टाइम देती, right? And see, when that happens, जब मैं लेट होना शुरू हो गई किसी नेक्स्ट मीटिंग के लिए, क्योंकि मैंने 45 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर इमेजिन किया था, एक्सीड 1.5 आवर इमेजिन नहीं किया था, तो लास्ट में फिर ये भी होता है ना कि अगर मैं कुछ ज्यादा भी उस चीज पे बोलना चाहूँ, I may feel that I have more to say on this, but I am also looking at the clock and I'm just saying the bare minimum that I feel will satisfy you, right? So don't do that. If you're interested in doing genuine qualitative research, then plan your interview in a location where there will be less disturbance. You will have sufficient time. That is, your respondent will have sufficient time. It shouldn't be like, नहीं आप ऑफिस में काम कर रहे होंगे या आप आपके काम करते करते बीच में मैं पूछ लूंगा. The person will not get into that flow, right? Permission for recording, you can't, this is not a sting operation. आपको recording के बारे में अपने participant से permission लेनी पड़ेगी. See, if a participant refuses to allow you to use a recorder and you feel that the nature of analysis that you will need to do requires interview to be recorded, right? Then you can think of another participant. अगर आप के लिए बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू टेप रिकॉर्डेड हो, तो अगर कोई नहीं चाह रहा है, then the better thing will be, okay, then try to find a participant who will be okay, but you can't record in stealth. And even while recording, sometimes it may happen that the person breaks down or you should know where to pause it also, right? Remain sensitive to your interviewee.
Like I said, be well prepared. And when I say well prepared, it's not just about the topic. It's always important to know why you're doing a particular research. और ये सवाल बहुत बार आता है, people want to understand others difficult experiences in life. आप कोई ट्रॉमा पे रिसर्च करना चाहता है, what impact childhood trauma has on learning, how casteism, caste-based discrimination is experienced in university. These are important research questions, but I would still encourage you to think about, if I'm exploring this, am I exploring this because there is also there is literature on it, right? आप वो लिटरेचर पढ़ सकते हैं, तो ऐसा क्या नया आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी का डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमिलिएशन, ऑफ ट्रॉमा, उसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे, कुरेदेंगे, राइट? It's after all a human being that you're engaging with. Is your research question just a repetition of all that has happened? Then why are you doing this research? Is it just a matter of intellectual curiosity for you? So in some of the themes, where there is a possibility to touch upon difficult aspects of one's life, it's good to know why you're doing that research, right? A lot of students, कई बार जब हम एजुकेशन पे जेंडर की बात करने लगते हैं तो उनका होता है कि हमको क्वीर कम्युनिटी के एजुकेशनल एक्सपीरियंस पे रिसर्च करना है. ग्रेट, बट क्या रिसर्च करना है? इसलिए रिसर्च करना है क्योंकि आप शायद किसी क्वीर कम्युनिटी के मेंबर को नहीं जानते हैं, दैट विल बी योर इंट्रोडक्शन टू इट. रीड लिटरेचर, देयर इज एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन इट, राइट? इज इट research should not be from a voyeuristic lens, or it should not be कि हाँ मतलब पता तो है कि harassment या sexual harassment कैसे feel होता होगा, but I want to understand from women, how do they experience it? What will you gain out of it, right? Is there something new that your research will bring that has not been brought yet? If it is just, if these things have been captured earlier, then why can't you just learn from that? Or is it that, it feels good to be explored, to be able to explore difficult areas. So know about why you're doing what research. If you're prepared for it, अगर आप कुछ traumatic experience को explore कर रहे हैं, do you have training in therapy or in listening, in counseling? What if the breakdown happens? Will you just get up and walk away? Will you be there with the person, if certain ruptures happen? So these things have to be thought through. Are you trained in that discipline to be able to hear it, to be able to stay with it? Active listening is extremely important. By active listening, it means that, आप सिर्फ उसको नोट डाउन करने के लिए नहीं सुन रहे हैं, आप सिर्फ उसको इसलिए नहीं सुन रहे कि वो कब खत्म होगा और अपना दूसरा सवाल पूछेंगे. You're really interested in listening to what is being said. Like I said, रिकॉर्डिंग करते टाइम बहुत बार होता है कि आपने परमिशन लिया है रिकॉर्डिंग का, तो आपकी जो भी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स हैं वो चार्ज्ड हो. वहां पे जाके never try your recording equipment for the first time in the situation of the interview. You should know the functioning of it. कैसे शुरू करना है, कैसे पॉज करना है, कैसे स्टॉप करना है, सेव करना है, कितने डिस्टेंस पे उसको रखना पड़ेगा कि ऑडियो क्लियर आए. All of that, you should test your equipment before, rather than going there, conducting the interview and then coming back to realize कि या तो आपने उसको ढंग से सेव नहीं किया या इतना दूर रखा था कि वो वॉइस कैप्चर नहीं कर पाया. So this all is a part of preparation, and it's also important that we respect our respondents' time, right? Reflexivity and understanding of participants' context. So if I interview somebody, of course, I have a location in terms of gender, class, education, caste, religion, nationality, language. So what people will share with me will also depend on whether they think I will be able to understand, or whether they think I will be judgmental about it. तो अगर आप अपने context को समझते हैं,
तो कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू करते टाइम आप अवेयर होंगे कि अगर कोई मुझसे बात करते हिचकिचा रहा है, वो कहीं इसलिए तो नहीं हिचकिचा रहा है कि उसको लग रहा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ. हाउ विल यू कन्वे दैट that yes, I'm being able to understand or I do care about this, या टू नो कि ओके शायद ये मेरे से जो नहीं बोल रहे हैं वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, but it's difficult to share it with me, right? This awareness is extremely important. I think I remember one of my students who was interviewing women about early childhood care, and a male student who after going to the field came back and said, the mother didn't say anything, and instead of concluding from it that the mother doesn't know, he was able to say, I think she couldn't talk to me because she's not used to men coming and interviewing her. Right, so that is the reflexivity. Instead of coming and concluding that these women don't know anything and they are illiterate क्योंकि वो गाँव में हैं, उनको कुछ पता नहीं है, he could recognize, is it that they didn't know or is it that they were uncomfortable telling it to me, right? For difficult, controversial topics, sometimes it helps to use hypothetical situations, news clips, videos, and seek people's reaction to it. So yeah, I can see that not many participants are there, at least in Zoom, but if there is any question. Stop the screen share. Yeah. Oh, not a problem. I had told Isha that in case, it takes longer and she needs to leave, she can do that also. Let me just check the Facebook page if there's a question. Okay, I can't see a question as of now. Preeti, आपका कोई सवाल अगर हो तो you can share. हाय मैम. Hi. थैंक यू सो मच मैम. काफी अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था. अभी कोई सवाल तो नहीं है मेरा, क्योंकि मेथड्स पे अभी मैं पढ़ ही रही हूँ. Sure. और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तक मतलब अभी इतना कुछ मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया इस पे. अभी एक किताब थी, रिसर्च मेथड्स फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्विटी इन एजुकेशन. Okay. ये काफी अच्छी किताब लगी. कल ही मैंने लाइब्रेरी से इशू कराई है, तो इसे पढ़ना भी स्टार्ट किया है मैंने. इसका रेफरेंस प्रीति जरूर शेयर करना. I mean, this is a book that sounds interesting and I would also like to go through this. Yes ma'am, I have a soft copy available for this book. I'll share it with you. So thank you so much. Thank you ma'am. Okay, thank you. So I'll end the recording now and I'll announce the next session soon. Okay, bye bye everyone.